Hello everyone, good evening. केमती अच्छा सबो? I hope भलो थिबो. Okay, so as you know, इधर हमें basically MCQs practice करूँ, so that will be beneficial for all our SSC banking रे जो type रो current affairs. Sorry. जो टाइप रो करंट अफेयर्स हम एक्सपेक्ट करि परिबा से गुडा क्वेश्चंस गुडा का हम एठी प्रैक्टिस करू बेसिकली. ओके, सो लास्ट वीक रो जहां भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थिला तार एमसीक्यूज हम आज रो क्लास रे कवर अप करिया को जाउ छे. ओके, सॉरी. प्रथम क्वेश्चन, एंड एज यूजुअल आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम माने भी टिके आंसर दबा पे ट्राई करो इन द चैट बॉक्स, राइट, सो दैट क्लास टा टिके इंटरैक्टिव हबो. Tholpeti Wildlife Sanctuary is located in which state? Try करो आंसर करिया को. Tholpeti Wildlife Sanctuary जो मैंने join ही ना थी, let them join से भीतरे, and जो मैंने अच्छा please try to answer. ट्राई करो, ट्राई करो. ओके, देखो, सो बेसिकली रिसेंट न्यूज कौन थिला कि गोटे वाइल्ड गौर, सो दिस एनिमल इज कॉल्ड गौर, ए वाइल्ड गौर that had strayed into densely populated areas of Kannur district, which is in Kerala. Okay, so obviously answer vartaman tamane jani chhathibo, answer will be Kerala. So this Tholpeti Wildlife Sanctuary is in Kerala, and why was it in news? Because gote wild gaur sethi tamara देखिया को तुमको मिली थिला. कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला रे अछि Tholpeti Wildlife Sanctuary, captured by forest department expert team and later released into the forest area of the Tholpeti Wildlife Sanctuary recently. ओके, तो केरला रे तुमको ये देखियो को मिलला, एंड आकु नहीं की फॉरेस्ट ऑफिसर माने रेस्क्यू करके नहीं की कोठी छाड़ देले Tholpeti Wildlife Sanctuary रे. Okay, so where is Tholpeti Wildlife Sanctuary? It is located in the Wayanad district of Kerala. It is a part of larger Wayanad wildlife sanctuary, and also it is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. So Nilgiri Biosphere Reserve is in the Western Ghats, right? Kerala region रे हमरो Nilgiri Biosphere Reserve अछि, से region रे ही हमें आपको देखिया को पाऊ Tholpeti Wildlife Sanctuary. Please remember. So answer कौन हबो? Answer will be Kerala. Tholpeti Wildlife Sanctuary is in Kerala. Sanctuary, it should be not century. Mu pronounce korchi century. It should be sanctuary, no? Okay, so National Technological or Technology Day is celebrated every year on which day? National Technology Day. Yancha recently jaichi National Technology Day. Try karo answer kariya ko. Any answer? National Technology Day केबे celebrate करू? So answer will be
May 11. Okay, and tamane janthibो Pokhran 2. Pokhran 2. Pokhran 2 केबे हेथिला कहि परियो मते? Pokhran 2 केबे हेथिला मते कहि परियो? No answer. So 1998 रे May 11 रे तमरो पोखरान टेस्ट हमरो सक्सेसफुल हेथिला May 11 रे. ओके, तो सही दिन को रिमेंबर करिया पे May 11 रे नेशनल टेक्नोलॉजी डे आमे सेलिब्रेट करू. वेरी इंपोर्टेंट. कैन यू टेल मी व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ पोखरान 2 एंड व्हाट इज द कोड नेम ऑफ पोखरान 1? दीटा टेस्ट अच्छी, दीटार कोड नेम भी गोटे दिया जाइए. ट्राई करो. पोखरान 1 एंड 2 रो कोड कौन अच्छी? इफ यू कैन आंसर. नो आंसर. अरे मैं इतने टाइम तुमको देबी कि आंसर करिया को. ऑपरेशन शक्ति. ऑपरेशन शक्ति. पोखरान 1 रो कौन थिला? स्माइलिंग बुद्ध. दिस वाज द कोड नेम. एटा भी बहुत गुडा एग्जाम्स रे पचारि दिए. स्माइलिंग बुद्ध. ओके, सो पोखरान 1 के भी इतला 1974 आई गेस. तो ताकू हमें स्माइलिंग बुद्ध नारे जानू. कोड नेम होची तार स्माइलिंग बुद्ध. पोखरान 2 हेथिला May 11 1998 रे. तार कोड नेम हला ऑपरेशन शक्ति एंड ताकू रिमेंबर करिया पे May 11 रे ही वी सेलिब्रेट आवर नेशनल टेक्नोलॉजी डे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बाइगर ट्राइब रिसेंटली न्यूज रे थिला. बाइगर ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. एक चारिटा स्टेट भितर तुम बाइगर ट्राइब को कोठी देखिया को पाओ. बाइगर ट्राइब दे आर ए पार्ट ऑफ पीवीटीजी. पीवीटीजी कौन? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप. ओके, so this Baigar tribe, they are also under this PVTG list of India. India रे total केतेटा PVTG groups अछंती, particularly vulnerable tribal groups अछंती. So 75 टा group अछंती as of now. And से भितरु 13 टा हमरो ओडिसा रे अछंती PVTGs. particularly माने ट्राइबल रो फिर अगेन बहुत ही vulnerable condition रे से माने थिबे तांको हमें PVTGs रे रखू. So this Baigar tribe is also in the PVTG, but you please answer. They are basically they are found mainly in which state? In which state they are found? Okay, देखो. So these are your Baigar tribe. News रे कौन पे थिले? Because 13 children from the Baigar tribe, okay, which is a particularly vulnerable tribal group, they were recently rescued from bonded labor. Bonded labor रो तांको rescue करा जायथिला कोठी? In Chhattisgarh Kabirtham district रो तांको rescue करा गला. Okay, so they are one of the India's PVTG. They are found in central India. मन रखिबो central India रे they are found, and that also includes Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. But majorly जदि हमें देखिबा अधिक परिमाण रे primarily they are found in Madhya Pradesh. Okay, Madhya Pradesh रे बहुत तमे पाइबे एमानकु, but ता माने नुह के तमे उत्तर प्रदेश रे किंबा झारखंड रे किंबा छत्तीसगढ़ रे भी पाइबोनी. किछि अमाउंट एठी भी अछंती, बट माने किछि नंबर ऑफ पीपल एठी भी अछंती. बट जेहेतु हमरो एठी ऑप्शंस रे ए क्वेश्चन रे ऑप्शन रे उत्तर प्रदेश भी अछि. ओके, सो जदि हम ए दीटा को कंपेयर करिबा देन ऑब्वियसली दे आर मेनली फाउंड इन मध्य प्रदेश हमें कहि परिबा. ओके, बिकॉज़ लार्ज नंबर ऑफ Baigar tribe people they are found in Madhya Pradesh. Okay, so answer will be Madhya Pradesh. Clear?
Okay, next, tara. Tara, can you name what is tara? Tara ro full form kono? Can anybody name? कहि परिबो कि तारा रो फुल फॉर्म कोन? So this is basically a tara, tactical advanced range automation or augmentation, range augmentation हैला। तो एमसीक्यू रे इधर हमको तारा रो फुल फॉर्म भी पचारि दे पारे, किछि गारंटी नहीं। तो जदि फुल फॉर्म पचारला देन हमें कहबा निहाती कि तारा रो फुल फॉर्म हला tactical advanced range augmentation. So what is this? This is basically a glide weapon system. Okay, so eta tamara news ro screenshot. DRDO and the Indian Air Force have conducted the maiden test flight trial of tactical advanced range augmentation. Go to Odisha ru hi semane eta test karchandi. Okay, and it is India's first indigenous माने कोट भी तमे ए वर्ड टा देखिलो ना और ए फ्रेज टा देखिलो India's first indigenous सेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोली भाबित India's first indigenous glide weapon system ता माने कोन इंडिया पाखरे नथिला पूर्वरु एंते किछि सिस्टम हला। तो अच्छा ग्लाइड वेपन सिस्टम माने कोन कि जो कन्वेंशनल वारहेड्स आमे यूज करूथुलु पास्ट रे, कन्वेंशनल माने बहुत पुराना हला जोटा माने चली आछि सेही जिंसटा को आमे किंतु वर्तमान यूज करि परिबा गोटे टारगेटेड लोकेशन ने पहुंचिया पे, बिकॉज़ आगुरु जो वारहेड गुडा का थिला दे आर नॉट कैपेबल कि से माने को आमे छाड़ देबो आ भूली जिवो हैला। तुमको जदि छाड़ीवार अच्छी प्रॉपर टारगेट गोटे देकी छाड़िया पड़ो, बट यूजिंग दिस ग्लाइड वेपन सिस्टम कौन करिवो कि जहार टारगेट भी नथिबो जो वारहेड रो ताको प्रॉपर टारगेट ऑगमेंटेड माने कोन पाथ, ओके गोटे पाथ देखै दबो कि तुमको नै कि एई टारगेट को हिट करियार अछि। सो सेही जिंसटा तमर करिवो कि तारा ग्लाइड वेपन सिस्टम। ओके, सो तारा होछि एटा tactical advanced range augmentation. It is basically a glide weapon system जे कि कौन करिवो, it converts conventional unguided warheads into precision guided weapons को तमे convert करि परिवो। Am I clear? Okay, this is the main function of तारा basically। अच्छा क्वेश्चन हमको पचार थिला कि किए डेवलप करछि, राइट? It is India's first indigenous glide weapon system designed and developed by which institution? Now here you have DRDO, Hall, Hindustan Aeronautics Limited, ISRO. Answer will be DRDO, but DRDO सहित भी तमर अछि, I hope एटा देखा जाउछि, रिसर्च सेंटर Imarat, RCI Hyderabad is also involved in developing this particular weapon system. Okay, so RCI Hyderabad along with collaboration of DRDO laboratories, they have developed it. Am I clear? So DRDO obviously raibo, but jodi emti bhi kichhi option achi, then that will also be correct. Okay, so amro question thila ki kiye develop karthila, so DRDO obviously will be our answer here. Okay, DRDO will be the answer. Okay, next, methane alert. Methane alert and response system, जार की short form हला MARS. Methane alert and response system is an initiative of which organization? Co-organization रो एटा गोटे initiative.
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जोटा आम कहूँ कौन यूएनडीपी राइट एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आउ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. सो ये चारिटा भितर कहार इनिशिएटिव होची ए पर्टिकुलर सिस्टम मेथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम. कैन एनीबॉडी आंसर? Can anybody answer? तो कौन है सिस्टम टाको आमे बुझिबा प्रथमे आमे सेटा बुझिबा. ओके मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम. सो मिथेन तो माने जानथिबो CH4 राइट. तो मिथेन टा बहुत जगह रो बाहर बहुत जगह रो हमरो एमिशन हुए मिथेन रो एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर सराउंडिंग फॉर आवर एटमॉस्फेयर. तो कोठो केते मिथेन एमिशन होची सेही जिंसटा सैटेलाइट बेस्ड डाटा थ्रू रो जानि परिबो ए सिस्टम टा. ओके एंड ए सिस्टम क्वेश्चन पचारची सिस्टम टा बनैछि कि. सो दिस सिस्टम इज बेसिकली मेड बाय United Nations हैला under the United Nations Environment Program which is UNEP. ओके तो UNEP आपको बनेछि क्लियर कौन पे न्यूज रे कौन पे थिला एटा एटा एमति नु के एबे बना है आगुर नथिला. दिस वाज देयर बट आगुर से को ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज से बेसिकली से मिथेन केते एमिशन होछि सेटा से देखुथला. वर्तमान से कोल आउ वेस्ट सेक्टर रो भी केते मिथेन एमिट होची सेटा से देखिबो. एंड रिसेंटली हमें देखिया को भी पाइछि गोटे इंडियन लैंडफिल जोटा कि अछि तमरो कंजूर मार्ग रे सेटा तमरो होची अमंग द वर्ल्ड्स 3 लार्जेस्ट मिथेन एमिटर्स हैला. दुनिया रो तीनटा लार्जेस्ट माने जगह जोठु मिथेन बहुत एमिट होची सेही भितरु एटा गोटे जगह ओके इंडिया रो अछि. तो सेठी पे एटा न्यूज रे अछि. बट हमको क्वेश्चन पचार थिला मार्स कहा द्वारा इनिशिएटिव निया जाइथिला. सो दिस इज एन इनिशिएटिव अंडर द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जोटा कि ऑफिशियली लॉन्च करा जाइथिला जनवरी 2023 रे. ओके एबे कोन पे न्यूज रे अछि त माने एठी पढिलो मु तुमको कहली भी. सो मेजर आर गोल कोन द प्राइमरी गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई. आइडेंटिफाई करबो क्वांटिफाई माने केते मिथेन एमिशन होची गोटे जगह रु कोल इंडस्ट्रीज रु वेस्ट इंडस्ट्रीज रु ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज रु सब इंडस्ट्री रु केते की मिथेन एमिशन होची सेटा से जानिला परे से गवर्नमेंट को नोटिफाई भी करेबो कि तमरो ए जगह रु अधिक रु अधिक मिथेन एमिशन होची. यू नीड टू स्टॉप दिस बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग कथा एठी आसी जिवो अगेन. तो ताको जदि रिड्यूस करियार अछि हमको मिथेन रो एमिशन कमेया को पड़ेबो. तो एटा गोटे कोन माने टारगेट से खोजे कि कोठू बाहरुची एंड से जिनसटा से नोटिफाई भी करे गवर्नमेंट को एंड इवन गवर्नमेंट को हेल्प भी करे मिथेन एमिशन कमेबा को. सो दिस इज द एंटायर सिस्टम ऑफ योर मार्स. ओके मार्स माने प्लैनेट मार्स भाबी दबनी. इट इज मिथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम व्हिच इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. कैन यू टेल मी यूएनडीपी रो हेडक्वार्टर कोठी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रो हेडक्वार्टर कोठी मत के कहि परिबो यूएनडीपी रो हेडक्वार्टर टा कोठी. कोठी इट इज इन अरे कोठी को ना आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. न्यूयॉर्क यूएसए. ओके न्यूयॉर्क यूएसए रे होची यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रो हेडक्वार्टर. यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी रो हेडक्वार्टर के कहि परिबो. सो दिस इज इन नाइरोबी केन्या.
ओके नाइरोबी केनिया रे तमर होची यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम रो हेडक्वार्टर ओके क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उद्गम पोर्टल was developed by which institution उद्गम पोर्टल कौन जदि जानी छे भलो कथा न जानले भी हमें भी पढ़िबा बट की डेवलप करी छी जदि जानी छे त माने जानी भी थिबो कि ए पोर्टल टा की डेवलप करी छी सो ट्राई टू आंसर try to answer no response yet अच्छा तो देखो recently news रे कौन पे थिला because the Supreme Court is reviewing the operation of the Udgam portal in response to a PIL public interest litigation तो PIL किछिटा फाइल हेछि Udgam portal विषय highlighting concerns about dormant funds being transferred to government managed pools and the challenges face in assessing them ओके तो उद्गम पोर्टल को एक्सेस करिया पे भी प्रॉब्लम होची प्लस मे बी सिथर किछि गोटे फंड रो किछि गोटे माने कोन कहबे गोटे कारोबार किछि गोटे चली छी हैला तो सेथि पय एटा तमर जने पीआईएल फाइल करथिला सुप्रीम कोर्ट रे रिगार्डिंग उद्गम पोर्टल सो उद्गम पोर्टल उद्गम रो फुल फॉर्म जदि हमें देखिबा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल उद्गम रो फुल फॉर्म हैला उद्गम ओके उद्ग हला तो इंफॉर्मेशन को हम एठी एम टा एम धरि परिबा कोन ओके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स माने हमर एलआईसी रो मन कर गोटे लोक अछि से किछरा एलआईसी करथिला एंड तार डेथ हे जायछि तो तार छुआ माने कि तार रिलेटिव्स माने जानि नहंती कि से कोठी कोन पैसा पत्र सब रखिथिला कोन तार इंश्योरेंस वगैरह थिला कि जोडा से माने जानि नथिबे किछ इन्फॉर्मेशन नथिबे सेही पैसा गुडा को तमे क्लेम करि परिबो हैला माने जोटा एमती बहुत वर्ष वर्ष हो गलानी क्लेम हेनी तमे गोटे इंश्योरेंस करछलो भूल जाइछ बट से पैसाटा मैच्योर हेकी अछि बट तमे ताको क्लेम करिनो तो से अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गुडा को तमे ए पोर्टल थ्रू रु तमे एक्सेस करिक ना से पैसा गुडा को फेरी पाई परिबो दैट इज बेसिकली उद्गम पोर्टल व्हिच इज लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओके आरबीआई ओके सो आंसर तो हे जिवो एठी आरबीआई उद्गम पोर्टल वाज रिलीज्ड बाय RBI hello which allows user to identify unclaimed deposits or accounts across multiple banks enabling them to claim the deposits or reactivate their accounts एमिति किछरा बैंक अकाउंट्स भी थिबो पड़े कि माने बहुत वर्ष होला पड़ी कि रहिछि तुमको भी मन नै से गुडा को भी तमरो एठी सब डाटा मिले कि तुम आउथरे ताको रिएक्टिवेट भी करि परिबो किछि गोटे पैसा रही जाइछि को गोटे बैंक अकाउंट रे किछि गोटे की पैसा गोटे आछि क्लेम हेनी रही जाइछि तो से सब पैसा तमे एठी फेरी के पाई परिबो सो व्हाइल द पोर्टल फैसिलिटेट्स आइडेंटिफाइंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इट डज नॉट हैंडल क्लेम सेटलमेंट ओके कोन पे हलानी ए क्लेम डेट करथिले मो कोन पे मिललानी ए सब जिंस गोडा को से कहबोनी से सब जिंस तमे बैंक को जाय कि बुझिया को पड़िबो हला बट तमे एठी कोन ट्रैक करके एक्सेस करि परिबो सेठी जिंस तमे करि परिबो उद्गम पोर्टल रे ओके
नेक्स्ट देखिबा अच्छा से उद्गम रिलेटेड जस्ट अ सेकंड किछ गोटे इश्यू होचे बोधे Is it clear? Can anybody confirm? ठीक है देखिए so as of early 2026 the Udgam portal for tracing unclaimed deposits has onboarded banks covering nearly 90% of such deposits. How many banks are onboarded? केतेटा बैंक को onboard करा जाइछि ए Udgam portal रे क्वेश्चन तो देखा जाउथबो तो try to answer this. ट्राई कर लो ओके तो our answer habo 30 banks covering around 90%. ओके सो केतेटा बैंक को onboard करा हिची उद्गम पोर्टल रे 30 banks covering around 90%. नेक्स्ट आरो आंसर करो
Which organization developed India's first germanium free thermal imaging payload Lumira? So se payload ro na hela Lumira E40150 or I50 for drones. This payload is basically for drones, and this is what type of payload? It is a germanium free thermal imaging payload जोटा कि इंडिया रो फर्स्ट. ओके I hope it is okay now. So options रे अच्छी Hindustan Aeronautics Limited, Bharat Electronics Limited, TSL Tata Advanced System Limited or Ion Space Labs. A charity vitru who has developed India's first germanium free thermal imaging payload? Tell me. देखो. So answer will be, it is an Indian startup named Ion Space Lab. है तो Ion Space Lab हमारा अच्छी option D, Ion Space Labs, right? Okay, so that has developed this particular payload. Now the नाटा तो है कौन हमें पढ़ी लेबे Lumira E40 I50. It is a lightweight thermal imaging payload for drones. This system replaces the expensive and rare germanium lenses. तो आगुरी जो lenses गुड़ा को use होतला ड्रोन गुड़ा करे जर्मनियम लेंसेस यूज होतला जोथरे कि तमरो चाल्कोजेनाइड ग्लास थेला एंड यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को से यूज करिकी पीपल को डिटेक्ट करिवो एंड व्हीकल्स को भी डिटेक्ट करिवो लॉन्ग डिस्टेंसेस रे. ओके सो दैट मींस ए पर्टिकुलर पेलोड रे तमरो एआई यूज करा हेची. इट इज टोटेड एज इंडियास फर्स्ट इंडिजिनस जर्मनियम फ्री जर्मनियम यूज हेई नाही इथरे thermal imaging system using AI for defense and disaster management applications. Okay, so हमारा question पचार थिला कि किए develop करची तो answer will be Ion Space Lab आपको develop करची. Okay, option will be option D. Answer will be option D. Okay, एटा बहुत तमे सुनी थी वो हंटा वायरस एबे recently बहुत चली थी माने news रे because बहुत बड़ा tragedy actually हेची देखिबा news कौन थेला. But it is mainly transmitted by this virus, hanta virus is mainly transmitted by which species? Mosquito, rodent, housefly, ना fruit bat. कौन होगा आंसर? हुआ एटा तो देखी थी वो न्यूज ना देखी ना. सो हंटा वायरस जोटा कि रिसेंटली तमे न्यूज रे देखिथिलो इट इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय व्हिच स्पीसीज. सो दिस इज योर हंटा वायरस. ओके, a suspected outbreak of hantavirus pulmonary syndrome on a cruise ship in the Atlantic Ocean has caused panic. तो गोटे क्रूज शिप थिला सेथिरे तमरो hantavirus pulmonary syndrome देखा गला जोथरे कि 3 जनकर डेथ भी हे जाईची. ओके, one patient is in critical condition in the ICU, but जदि हमें देखिबा till now I think 3 deaths have been reported and several passengers are ill, and reason ko hauchi it is the hantavirus. Okay, hantavirus is say zoonotic disease. Clear? So zoonotic disease माने animals to humans को transmit हुए.
Okay, it can cause two serious diseases. One is hantavirus pulmonary syndrome जे कि तमरो lungs को affect करे, आउट अछि hemorrhagic fever with renal syndrome हैला जोटा कि तमरो kidney को affect करे. तो ए दीटा syndrome देखा जाए because of this hantavirus, and both this condition can become life threatening with a high mortality rate माने direct death. So जेमते हमर कोरोना वायरस सही थिला सेठी की fatality rate आर भी रहउची हंटा वायरस रो, and it is mainly transmitted by whom? By rats, mice, तो जहाँ को हमें कहू छु कोन rodents. Okay, so answer will be rodent. It is not transmitted by mosquito, housefly, fruit bat, but rather rodent. Okay, आउट हमें पढ़थिलु निपा virus. Okay, so that is transmitted by bats. Nipah virus सेटा भी recently news रे अछि. Okay, Nipah virus पाई भी बहुत जनकर डेथ हे गलानी केरला रे, वेस्ट बेंगल रे के से सब जगह रे डेथ हे गलानी. Next, Mayon volcano that was recently seen in news is located in which country? Mayon volcano सुनिचो किए? Mayon volcano that was recently seen in news is located in which country? Indonesia, Japan, China, Philippines. Cool. Answer will be Philippines. Okay, तमन तो कोनो तो मते ही आंसर कहै को पड़िबो, काहे बेकर में टाइम वेस्ट करछि. Answer will be Philippines. So the Mayon volcano, which is in the Philippines, that has erupted recently, forcing evacuations after authority raised the alert to level 3 on a 5-step scale, with lava fountaining and ashfall endangering the Albay province. Okay, so it is in Philippines. Next question, देखो. Swamitwa scheme is launched by which ministry? Ministry of Rural Development, Ministry of Panchayat Raj, Ministry of Housing and Urban Affairs, or Ministry of Agriculture. Swamitwa scheme. Hello? Swamitwa scheme is launched by which ministry? The answer there. अच्छा चलो, so देखिए कौन पे न्यूज रही. Recently, the Union Minister of Rural Development and Panchayat Raj has issued guidelines regarding the Swamitwa scheme, and this scheme was launched on the National Panchayati Raj Day. National Panchayati Raj Day. आमर गोटे ओडिशा रे पंचायती राज दिवस आमे मनौथुलो, सेटा को बंद कर दिया गला and हमको मर्ज कर दिया गला National Panchayati Raj Divas, which we celebrate on April 24. से April 24 रे ही तमरा स्वामित्व स्कीम टा भी लॉन्च करा जायथिला by Rural Development and Panchayat Raj Department. Okay, स्वामित्व रो full form हैला Survey of Villages and Mapping, SVAMITVA, Survey of Villages and Mapping with improvised technology in village areas. Swamitwa full form eta. It is a collaborative effort of kaharo Ministry of Panchayati Raj, State Panchayat Raj Department, State Revenue Departments and Survey of India. हैला, तो हमरो इट ऑप्शंस रे कौन थिला देखो. It is launched by which ministry directly हमको पचारची, तो की मिनिस्ट्री होबा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज. ओके, पंचायत राज भी हमें कहबा, रूरल डेवलपमेंट भी कहि परबा, दीटा जाक हमरो इट ऑप्शन रे अछि बाय द वे. हैला, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एटा तो नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एटा नहीं, तो ए दीटा भितर ही हबो. ओके नहीं, बट मोस्ट प्रोबेबली कौन होबा आंसर? विल इट बी पंचायत राज और विल इट बी रूरल डेवलपमेंट? कौन होबा भाबछो? दीटा जाक ही अछि ऑप्शन रे. तो जदी एमिति क्वेश्चन पड़ला हमें कौन आंसर दबा?
What will be your answer? Ministry of Panchayat Raj है because तमरा सेंटर रो पंचायत राज डिविस माने पंचायत राज मिनिस्ट्री इन्वॉल्व अछि, स्टेट रो पंचायत राज इन्वॉल्व अछि, प्लस स्टेट रो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व अछि हैला, एंड ताको पंचायत राज डे रे भी लॉन्च करा जायथिला. सो आंसर विल बी ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज. ओके एंड ए ना रो भी तमे बुझी परथबो कि बेसिकली कोन करा हबो, विलेज गुडा करे सर्वे करा हबो, मैपिंग करा हबो, जोथरे कि तमरो माने इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज करके विलेज एरिया रो सब सर्वे मैपिंग वगैरह हबो. ओके इट इज ए इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया. इट इज स्कीम फॉर मैपिंग द लैंड पार्सल्स इन रूरल इनहैबिटेड एरियाज यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी. इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी में कहली तो ड्रोन टेक्नोलॉजी तरे यूज करा होची, प्लस ए जिनसटा यूज करा होची कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस. Okay, and this mapping will be done across the country in a phase wise manner for period of 4 years. Okay, 4 वर्ष जाए ये मैपिंग टा करा हबो 2022 माने 2024 भितरे जहाँ भी हेची तमर. ओके ये सब जिनस करा हबो. नेक्स्ट, नावल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज which is India's first indigenous helicopter launched anti-ship missile NASAM SR हैला. NASAM कौन naval anti-ship missile, SR कौन short range हैला. तो there can be different types of missile. short range missile है परिवो, medium range missile है परिवो, long range missile है परिवो. तो एटा particularly आर किसी ना दिया है नहीं, तो एटा तमे तार ना कही परिवो naval anti-ship missile short range. So which is India's first indigenous, again ए जिनसटा जोठी भी आसुची phrase that becomes important. It is a helicopter launched anti-ship missile. माने गोटे anti-ship missile जोरा तमे helicopter रू भी launch करी परिबो. Am I clear? Helicopter रू भी तमे एटा को launch करी परिबो. एटा को किए डेवलप करिछि? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसरो, DRDO, भारत डायनामिक्स लिमिटेड. नासम SR को किए डेवलप करिछि? ट्राई करो, भाबो कोठी ना कोठी तो पढ़ी थिबो रिसेंट करंट अफेयर्स. और जदि तमे जानि परनो एगुडा को देन यू आर नॉट अपडेटेड हैला. तो ए क्लास गुडा न कले तो तमे आहुरी बुडी हि जिवो सतरे. तो देखो एरा तमरा न्यूज़ आर्टिकल भी आथिला. नासम SR पूर्वरु नासम MR मिसाइल भी टेस्ट करा जायथिला ता पूर्व वीक रे. MR माने मीडियम रेंज. ओके तो हमको पचार किए डेवलप करछि तो मोर एठी लेखा लिखि दिया जायछि हु आर द डेवलपमेंट पार्टनर. प्रीमियर DRDO लैब इन हैदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, दे वर पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस. सो आंसर तो तमे पाई गेलो DRDO हैला. तो ए एंटी-शिप मिसाइल गुडा को किए बनैछि DRDO. बट आउ किछि इन्फॉर्मेशन भी हमको जानि थिबा दरकार. कोन रहला कौन से गुडा को. So India achieved a significant milestone in its indigenous maritime strike program by successfully conducting the maiden salvo launch of the NASM SR जोटा मु तुमको कहली एबे from a helicopter. मु कहली from a helicopter you are able to throw anti-ship missile. Okay तो इंडिया एटा करियार माने इंडिया रो जिंस बनैथिबा एटा प्रथम थरो एंड एटा को के डेवलप करछि DRDO. So it is an advanced air launched anti-ship missile. Air launched माने हेलीकॉप्टर रो जेहेतु ताको लॉन्च करा होछि so it becomes air launched. Okay designed to replace aging foreign origin missiles. Okay आगुरो हमें foreign origin missiles यूज करथुलो जेमते कि तमरो ब्रिटिश रो Sea Eagle यूज करा होतला. तो ता बदल रे वर्तमान NASM SR यूज करा हबो. Okay it is India's first indigenously developed helicopter launched anti-ship missile system. Helicopter भी तमे launch करी परिबो. मेन कथा हला सेटा. And here also research center Imarat in collaboration with other DRDO laboratories they have developed this particular thing. Okay next question jiba. E-Prapti portal is launched by which organization? E-Prapti portal is launched by which organization? RBI,
EPFO, Security and Exchange Board of India, SEBI, okay, SEBI, এটা হয়ে গেল EPFO, এটা হয়ে গেল RBI and NABARD, লাস্টটা হলো NABARD। কি লঞ্চ করেছি ই প্রাপ্তি পোর্টাল? টেল মি, ই প্রাপ্তি পোর্টাল কি লঞ্চ করছে? କୁହ, ଏବେ ଯାଇ ତ କିଛି ଆନ୍ସର ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କହିଲନି, ଏବେ ଯେତିକି ରିମେନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତାର ତ ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର। सो जेमिति आम उद्गम पोर्टल थिला पढ़िलु आमे उद्गम पोर्टल, राइट? तो उद्गम पोर्टल रे कोन होतला, जो गुडा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स थिला से पोर्टल थ्रू रो तमे क्लेम करे परिबो। सिमिलरली ई प्राप्तिता होची तमरो ईपीएफओ रो, लॉन्च बाय ईपीएफओ, सो आंसर विल बी ईपीएफओ। बट एथरे कोन हुए कि जो माने इनएक्टिव अछंती कि तांकर जो प्रोविडेंट फंड रो से माने पैसा काढी नहांती किछि भी कारण रो, देन सेही जिंसटा तमे करि परिबो थ्रू दिस ई प्राप्ति पोर्टल। तो उद्गम पोर्टल गोटे हमें पढ़िलु, बेसिकली बैंक रो डिपॉजिट्स, एंड ई प्राप्ति पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय ईपीएफओ। ए रिसेंटली लॉन्च कराई छी, जो थरे कि तमे ईपीएफओ माने पीएफ पैसा गुडा को बाहर करि परिबो, जो गुडा को तमे काढी परिनो किछि भी कारण रो रहि जाई छी, इनएक्टिव अछि, से माने काढी परिबे इथुरो। ओके, clear? Next question jiba. The sacred Piprava relics were originally discovered in which state? तो रिसेंटली कौन हेतला पिपरावा रिलिक्स माने बुद्धंकर किछि रिलिक्स गुडा को डिस्प्ले भी करा जायतिला न्यू दिल्ली रे, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो ताको ओरिजिनली कोठी से पिपरावा रिलिक्स गुडा को तमरो डिस्कवर करा जायतिला, क्वेश्चन पचरुची सिया। ट्राई करो, ट्राई करो। So this was mainly discovered, मैंने primarily originally सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश हेलो, एठू प्रथमे तो आपको डिस्कवर करथिला, माने ओरिजिनली डिस्कवर करा जायतिला। दिस इज इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज दिस रिलिक्स आर रिलेटेड टू बुद्धिज्म। एगुडा तो तमे जानि थिबो, पिपरावा रिलिक्स बहुत न्यूज रे थिला, जनवरी रे भी हम गोटे न्यूज रे पढ़थिलु। बुद्धिज्म सहित रिलेटेड लॉर्ड बुद्धंकर रिलिक्स गुडा जो गुडा रिमेनिंग्स गुडा को स्तूपस, ओके, माने रिमेनिंग जोटा कि अन्य कंट्रीज रे भी किछि थिला, ताको आने कि फिर डिस्प्ले भी करा जायतिला। ओके, तो ये सब जिंस गुडा को करा जायतिला दिल्ली रे डिस्प्ले करा जायतिला। बट जदि हमको क्वेश्चन पचारथिले ओरिजिनली तमे पिपरावा रिलिक्स कोठु पाइथिलो, देन तमे एटा पाइथिलो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश रो पाइथिलो। ओके, सो आंसर विल बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेत। तो अब रिसेंटली तमरा मोबाइल रे गोटे तमे इंस्टा रे बहुत भी पोस्ट देखिथिबो, प्लस तमर मोबाइल रे गोटे माने साउंड आस्थेबो, गोटे अलार्मिंग साउंड आस्थेबो। ओके, इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम हमें कहि परिबा that has been developed by which organization? तो ये जो अलर्ट सिस्टम टा जहां ना हला सचेत किए डेवलप करी छी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट और इसरो और डीआरडीओ और सीएसआईआर किया को डेवलप करछि सचेत अलर्ट सिस्टम। मोबाइल रे आसीथिबो तमरो कि एतिकी पानी पाग वर्षा हबो, गोटे साउंड गोटे आसीथिबो, दैट इज सचेत। तो एटा किए डेवलप करछि?
नो रेस्पॉन्स सो एटा को डेवलप करछि तमरो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट ओके सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स क्लियर तो तमरो जहाँ भी वेदर को नहीं कि अलर्ट्स हैला से सब जिनस गुड़ाक तुमको से मिल पार जदि किसी गोटे डिजास्टर हबार अच्छी पूर्व तुमको अलर्ट गुड़ाक ये मिल पार मोबाइल ऐप रे सो दैट इज सचेत नेक्स्ट क्वेश्चन नोयल रिवर रिसेंटली न्यूज रे थिला इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर नोयल रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच रिवर को ऑप्शन है नर्मदा रिवर यमुना रिवर कृष्णा रिवर कावेरी रिवर को रिवर रो ट्रिब्यूटरी होची नोयल रिवर आंसर विल बी कावेरी रिवर हैला कैन एनीबॉडी से मी द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर ओरिजिन तमरो एटा कोठी इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर बट वेयर इज द ओरिजिन Velliangiri Hills, okay, which is in Tamil Nadu. A2 hochi origin of Noyal River, okay. So that is basically tributary of Kaveri River. Clear? Time he galani to sit pe mutike jaldi jauchi. Next question. Okay, who was re-elected for a third consecutive term as the deputy chairman of Rajya Sabha in April 2026? जगदीप धनकर हरिवंश नारायण सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रमोद तिवारी री इलेक्टेड फॉर थर्ड consecutive term टेल मी डेप्यूटी चेयरमैन जानथिबो तीन थर पे से री-इलेक्ट होछंदी हु इज हरिवंश नारायण सिंह ओके तो ही इज प्रेजेंटली द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा एंड फॉर द थर्ड consecutive टाइम consecutive माने लगातार तीन थर हेलानी से ही होछंदी तमरो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा हरिवंश नारायण सिंह जगदीप धनकर तो रिजाइन कर देले ना ही वाज आवर कोन वाइस प्रेसिडेंट ही रिजाइन्ड राइट ओके नेक्स्ट who has been named as the new CEO of Apple company, succeeding Tim Cook, who is moving to the role of executive chairman. So Tim Cook is now the executive chairman of Apple, but who is the new CEO of Apple? A question गुड़ा का तो पचारे exams रे. Okay, Apple रे CEO किए वर्तमान. Apple phone तो आजकल समस्त धरलनी. तो किए वर्तमान CEO? आंसर आर तो कोई पारी वही आई होप जानছো ना जानो John Ternus, please remember, okay, John Ternus, officially, so he has been named as the new CEO of Apple after Tim Cook, who will be moving to the executive chairman post, okay, John Ternus. Next. The director of which prestigious institute was recently conferred with Swaminathan Award for Excellence in Agriculture Research. Agriculture Research ପାଇଁ Swaminathan Award recently को institute रो director को मिली कोई परिबा Any response?
मिली डॉक्टर श्रीनिवास राव को, डॉक्टर श्रीनिवास राव हु इज योर डायरेक्टर ऑफ ICAR IARI IARI ର फुल फॉर्म कौन IARI एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिंपल है ना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ओके सो डॉक्टर श्रीनिवास राव को मिली सो आंसर विल बी ICAR ARI जदि तुमको नेम भी पचारे स्वामीनाथन अवार्ड क्या मिली फॉर एक्सेलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च आंसर विल बी श्रीनिवास राव ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ISRO successfully conducted a test fire of which type of engine intended for its future heavy lift satellite launch vehicle mission? Cryogenic engine, semi cryogenic engine, plasma thruster or solid propellant engine. तो recently ISRO तमरो गोटे टेस्ट फायर करिछि गोटे टाइप ऑफ इंजिन रो हैला इज इट क्रायोजेनिक इंजिन इज इट ए सेमी क्रायोजेनिक इंजिन कि ए दीटा टाइप रो इंजिन कोटा एटा तो जानि थिबो ना एटा भी जाननो डोंट टेल मी एटा भी जाननो cryogenic engine already amaro achi okay we have already tested it but ame right now we are going for semi cryogenic engine so recently tamara semi cryogenic engine to test fire kara jaithila last question for today which ministry has launched Deport Darpan portal Anna Mitra app and Anna Sahayata platform to improve India's public distribution system Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Science and Technology, Ministry of Agriculture. Simply guess work रू भी तो मेरा आंसर कोई परियो किए obviously इठी हमें food distribution कथा कहूचु okay so को ministry involved थे वो Ministry of Consumer Affairs, Ministry Food and Public Distribution is involved. Okay, so this was for today's class. पूरे टाइम MCQs आमे देखिलु जहाँ भी important news थिला last week रो. I hope तमने टिके टिके तो निहाती किछि ना किछि उड़े तमे feed मने सिखी थिबा. हंटा वायरस पढ़िलु आमे तारा पढ़िलु आमे ए सब जिंस गुडा आमे नुआ जिंस आम पे obviously daily एंते बहुत सारा नुआ जिंस आसे so we need to be updated with this kind of current affairs which will be helpful for our upcoming exams okay so please consider subscribing if you have not subscribed yet and please share it with your friends so that समस्त मिसे की देखिबा ने क्वेश्चंस पडा कर आंसर करबो तम माने तबे ओनली क्लास ता हमरो एक्साइटिंग लागिबो अदरवाइज कोन मो निजे ही गप चलथबी देन इट विल बी बोरिंग एज यूजुअल okay so thank you everyone dekha haba ami next class re till then bye good night